Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. Today we are going to talk about redox reactions. This is primarily for AS, and but you have to understand that there's two kinds of reactions in the world. जो दो major kinds of reaction हैं. One is redox and one is acid base. There are others, but वो इतने ज़्यादा common नहीं हैं जितने ये दोनों mainly होते हैं. So that makes them super important. There is the displacement reaction, इसके अलावा भी होता है वो, but these are the two major categories of all the reactions. So redox को समझने के लिए, for your syllabus, what you need to know is number one, identifying them obviously. Number two, identifying or calculating the oxidation states and oxidation numbers जिसको हम बोलते हैं, and उनको use करके आप identify करते हो कि कौन सी चीज़ oxidize हो रही है, कौन सी चीज़ reduce हो रही है. And thirdly, you have to be able to balance redox equations. Redox equations को balance करते हुए हम उसमें, because redox reactions involve transfer of electrons, तो हम उसमें electrons का transfer करते हैं या protons का transfer करते हैं. That way we balance out the charge and then we balance out the equation as a whole, because there are a few laws we need to conserve, like there's law of conservation of energy, charge, mass, and momentum. So charge and mass are the two main ones that we need to focus on for this. So that's what you need to know. Now, from O levels, you already know what redox reactions are. So redox reactions are basically two kind of reaction. Redox basically means there is 4 ways in which we check them. One is in terms of electrons. Electron का मतलब ये है that reduction is gaining electrons. Okay, and oxidation is loss of electron. And not just electron, it's also true for hydrogen. Not hydrogen ion, by the way, it is hydrogen atom. Similarly, oxygen, iska bhi aisa hi hai, it's opposite, loss and gain, like that. And lastly, there's a thing called oxidation state or oxidation number. If it goes up, that is oxidation, and if it goes down, that's reduction. But ये होता क्या है oxidation number? Oxidation number is a mathematical construct. Oxidation number or oxidation state, imagine if there was only one kind of bonding in the world, ionic bonding. And that will mean electrons या transfer हो रहे हैं. That's the only kind of possibility there, right? In a world where there is only ionic bonding. तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स कोई चीज़ लूज करेगी तो वो ऑक्सीडाइज होगी, और जो चीज़ गेन करेगी वो रिड्यूस होगी. एंड दैट्स द ओनली काइंड ऑफ रिएक्शन दैट्स पॉसिबल. सो अगर ऐसा होता तो उस चीज़ के ऊपर क्या चार्ज आता, उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं. सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ अ मैथमेटिकल वे फॉर अस टू फिगर आउट कि अगर ये आयनिक रिएक्शन होता, अगर ये आयनिक बॉन्ड होती, तो फिर कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता. ऑफ कोर्स इट्स क्लोजली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, because electronegativity is how we assign these numbers. कि अगर आयनिक बॉन्ड होगी तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है. और उसको असाइन करते हुए हमारे पास एक सिंपल सा वे है. वी विल ऑलवेज ट्रांसफर देम इन दिस ऑर्डर एंड आई कॉल इट फंक. सो अगर फ्लोरीन है तो सबसे पहले उसको आप -1 दे देंगे और बाकियों का फिगर आउट करेंगे. अगर फ्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन है, तो -2 उसको दे देंगे, बाकियों का फिगर आउट करेंगे. अगर ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन है, या फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों नहीं है, नाइट्रोजन है, तो फिर आप उसको -3 देंगे और फिर आगे देखेंगे. और अगर तीनों नहीं है तो फिर क्लोरीन को -1 देंगे. और अगर ऐसा नहीं है, चारों ही नहीं है, तो कुछ और देखेंगे. ओके, अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों है तो आप पहले ऑक्सीजन को असाइन करेंगे और नाइट्रोजन को किसी और तरीके से फिगर आउट करेंगे, बिकॉज दिस इज द ऑर्डर, or fluorine is always at the highest level. So using this, let's try to put these definitions to some examples. Let's suppose मेरे पास S plus O2 का reaction आया है, या iron plus oxygen का reaction आया है. In presence of water, it forms iron oxide. Let's see. Obviously first we'll have to balance it, तो हम इसको balance करते हैं. Okay. Now let's see. Sulfur here has no oxygen. It has gained 2 oxygen here. So we say sulfur is oxidized. But what is reduced? It's hard to say here because there's nothing losing oxygen unless you say oxygen itself is losing oxygen, which might be right, but is there a better way?
या ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे आर अ बेटर वे. अभी हम उसको देखेंगे कि उससे कैसे ये रिएक्शन रिडॉक्स होता है. बट या जनरली here sulfur is oxidized, oxygen is reduced, but we can't really use the definition of oxygen here because what is losing oxygen? We don't know. And it becomes a really philosophical thing to say. Oxygen is losing itself. Now, similarly, iron and oxygen. Iron has no oxygen on the left side, but it has gained oxygen, so we can say iron is oxidized. So oxygen must be reduced. But again, anybody who says oxygen is losing itself, I feel like they are losing themselves. There should be a better way, and that's oxidation state. Let's do another one. क्या सिर्फ elements की होती है? What if I had methane? I release it in the air. ठीक है, चूल्हा जलाया और वो natural gas चली गई. It will form carbon dioxide and water. Sure, it will be a really slow reaction. Sure, इसको balance करना होगा. But is this redox? Yeah, definitely. Both carbon and hydrogen are gaining oxygen. और मैं इस पर अगर ऑक्सीजन वाली डेफिनेशन लगाऊं, अगेन इट्स डिफिकल्ट टू से किसने ऑक्सीजन लूज की. हाइड्रोजन वाली डेफिनेशन लगाऊं तो हाँ, बिकम्स रिलेटिवली इजियर. आई कैन से कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, एंड ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, सो ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड. आई कैन यूज दैट विल वर्क. और ऑक्सीजन स्टेट माइट ऑल्सो वर्क, जिसको हम देखेंगे. बट समटाइम्स हमारे पास ये तो डायरेक्टली ऑक्सीजन आ रही है ना. व्हाट इफ वी हैव इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन? लाइक अगर मेरे पास KClO3 होता और उसको मैं ग्लूकोज में ऐड कर देता, या किसी और शुगर में डाल देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं. नाउ दिस शुगर विल प्रोवाइड द ऑक्सीजन फॉर दिस, सो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड KCl, एंड ऑफ कोर्स विल हैव टू बैलेंस इट. काफ़ी इसकी गंभीर सी बैलेंसिंग होगी. बट रिगार्डलेस, यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे तो दोनों के पास ऑक्सीजन है. So how do we know which one is oxidized, which one is reduced and all that? So for that, oxygen states are the best way to figure this out. अब oxygen state कैसे assign करते हो आप? You basically talk about कि electron transfer हो रहा है ना, तो oxygen state assign करने के लिए हमें ये देखना है any element or a compound, basically any pure substance, it has a zero oxidation state. Any element or compound, because they are pure substances, they will have zero oxidation state. What this means is that sulfur is element 0, oxygen is element 0, 0, 0. जहाँ element है वहाँ 0 है. Okay? अगर ऐसा नहीं है, अब किसी और को देखते हैं. We go in order of funk. We start with FONCl in that order. And we assign oxidation charges or oxidation states. In the first equation on the right side, I have oxygen. तो मैं उसको -2 दे दूंगा क्योंकि ग्रुप 6 में है, फंक में पहले वाला है. So, yep, there is no fluorine, so ऑक्सीजन को असाइन करूंगा -2. To cancel it out, जो ऑक्सीजन की तरफ से ऑक्सीजन स्टेट आ रही है, to cancel it out, sulfur must have some opposite charge or opposite oxidation state. So oxygen is bringing -2 each. So 2 times -2, -4. So it should be +4. And now if we analyze this, sulfur went from 0 to 4. That's an increase. Sulfur is oxidized. Oxygen went from 0 to -2. That's a decrease. Oxygen is reduced. कितना आसान हो गया? Let's try the same for the next equation. This one is again, I'll use -2 for oxygen. And based on that, I can figure out this is +3. ओलेल्स में आपने क्रिस क्रॉस मेथड या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड या शू लेस मेथड, इसके डिफरेंट नाम हैं, आपने देखा होगा, तो यू कैन यूज़ दैट एज वेल. सो यहाँ से आप देखोगे कि आयरन वेंट फ्रॉम 0 to +3, दैट्स एन इंक्रीज, सो आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड. ऑक्सीजन वेंट फ्रॉम 0 to -2, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, डिक्रीज होया. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. CH4 में क्या करें? किसको पहले असाइन करते हैं? सो विल असाइन हाइड्रोजन फर्स्ट. सो हाइड्रोजन इज +1, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और इधर -2 पहले असाइन कर दिया. नाउ लेट्स सी, अगर हाइड्रोजन +1 है एंड दैट मीन्स देयर इज 4 हाइड्रोजन, सो ओवरऑल +4 है, तो कार्बन शुड बी -4. दैट्स इंटरेस्टिंग. लेट्स सी, on this side carbon is +4 because oxygen -2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो
-4 से +4, there you go. अच्छा, आपको मैंने बताया था कि हमने कहा कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा है. ऑक्सीजन स्टेट से हमें नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन स्टेज एट +4, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज. बट व्हाट डज ऑक्सीडाइज? कार्बन. Carbon is gaining, and not just gaining, its oxygen state is increasing, and oxygen's oxygen state is reducing. Okay? So based on this, we can easily figure this out. Now let's look at the next one, and this is a little complicated one. But अगर आप funk वाला rule याद रखोगे, you won't get into trouble. So let's see. Oxygen funk में पहले आता है, नाइट्रोजन बाद में आता है, क्लोरीन उसके बाद में आता है. सो विल फर्स्ट असाइन इट फॉर ऑक्सीजन. सो -2. पोटेशियम +1 है, बिगेस्ट ग्रुप 1 है. ओके, यहाँ पे भी ये -2 है, -2, -2. और क्लोरीन इन KCl फंक के लिहाज से क्लोरीन आ रहा है, तो -1 फॉर क्लोरीन. असाइनिंग पोटेशियम +1, बिगेस्ट ग्रुप 1 है. कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने देखा तो ये +4 होगा. हाइड्रोजन +1 है, इधर भी +1 है. सो कार्बन को हमें उस लिहाज से देखना पड़ेगा, है ना. एंड यू विल सी कि ज़रूरी नहीं है दैट एवरीथिंग जस्ट हैज़ लाइक उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव ही हो. ज़ीरो भी हो सकता है किसी चीज़ के ऊपर, फ्रैक्शन में भी हो सकता है. लेकिन हमने इतनी इस तरह से तगदो नहीं करनी है. बट हम देखते हैं. ऑक्सीजन इज -2 × 11 -22. हाइड्रोजन इज +1 × 22 +22. सो 0 हो गया. सो कार्बन का भी 0 होगा ताकि ओवरऑल 0 रहे. एंड KClO3 में अब क्या करें? क्लोरीन इज X. आई डोंट नो व्हाट क्लोरीन इज, और हम उसको -1 नहीं कह सकते क्योंकि फंक में से एक ऑलरेडी हो चुका है. फंक में से एक टाइम पे एक ही होता है. अब इसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल यूज द आइडिया ऑफ एन अलजेब्रिक इक्वेशन. पोटेशियम का +1, क्लोरीन का X, ऑक्सीजन का -6. क्यों? 3 × -2, -6. That gives me a 0 overall, which gives me X equal to +5. That's interesting. Chlorine is +5. Has it lost 5 electrons? No. But if it was ionic bonding between chlorine and oxygen, it will. वो है नहीं, but अगर होती तो ऐसे होता. Let's see what is gaining electrons. On the left side, we have carbon at 0 and carbon goes to +4. That means carbon is oxidized. Chlorine is at +5, it goes to -1. That means chlorine is reduced. Oxygen and potassium and hydrogen don't change. So they are spectators. They will not change. Okay? So there you go. Based on this, we can easily figure this out. I'm going to give you a few compounds. I would suggest कि आप इसको try करो. So P2O5. Try to figure out the oxygen states of each. SO4 with a -2. अब इसमें overall -2 करना है आपने. Sulfur is X and oxygen is -2. Al2Cl6, again the idea of funk will help. ClO2- will help. So try to figure it out for each of these. And then do it for H2SO3 and H2SO4, because that is how we name the IUPAC names of these things. Okay, go on, take a few minutes. Put your answers in the comments. Now, if you understand this, I will post the answers in the comments here. I'm going to give you an equation and I want you to figure out the oxidation states of each of them, and then based on that, try to figure out कि उसके oxidizing agent कौन सा है और reducing agent कौन सा है. Basically, the idea is that anything that gains electrons or that basically is reduced, that is the one that is oxidizing agent. And anything that loses electrons, yeah, things that is oxidized, that's a reducing agent. So here's one equation, and I would suggest कि आप इसको use करो. I'm going to give you a few more equations.
Okay. So try to figure out the oxidizing agent, the reducing agent, और इनमें आप try to figure out कि क्या हो रहा है. Alright. So that is how you assign oxidation states, and you can easily solve this. If I will post the answers in the comments, and if you have any questions, we have the WhatsApp group. Feel free to post there, and I'll be happy to help. Thank you so much for watching. See you in the next class. Allah Hafiz.